Hello students, तो ਆਪਾਂ स्टार्ट किया सी anatomy of flowering plants ਉਹਦੀ classification ਕੀਤੀ ਸੀ on the basis of origin and development. Now ਉਸੇ ਤੋਂ further continue ਕਰਾਂਗੇ. Now next classification is on the basis of position. ਹੁਣ position ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ apical, lateral, intercalary. Apical means जो shoot के root के tip के ऊपर पिया हुआ है, that is known as apical meristem. जो कि दो तरह का shoot apical meristem, root apical meristem. Which one is present at the tip of root and shoot? Now मुझे apical meristem का काम होता है plant की length increase करना. जो plant की length को increase करने विच help करता है. Now next is the lateral meristem, which one is present at the lateral sides. On the lateral sides, तो दा काम की होगा to increase width, to increase diameter. तो जो apical meristem है वो length increase करता है, जो lateral meristem है वो diameter या width increase करता है. Now last is the intercalary meristem. Now what is intercalary meristem? It is the part of apical meristem. ठीक है जी, हिस्सा तो एपिकल का ही सी जो कि उस तो अलग हो गया, पीछे रह गया. ठीक है, सो इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच लेफ्ट बिहाइंड एंड गेट इंटरकलेटेड बिटवीन परमानेंट टिश्यूज. तो पीछे रहन करके परमानेंट टिश्यूज के विचाले फंस जाता है. सो इट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये कदों करते जाता है. Obviously apical का हिस्सा है तो how to increase length, but कदों? तो in case of plants सानू पता है कि grazing is often. ठीक है, ज़्यादातर कीमना animals जेडे हैगे they depend upon herbivores, they depend upon plants. तो जदों ओहो grazing करते हैं उस तो बाद plant नू दोबारा फिर तो grow करने लिए कौन help करता है? Intercalary meristem. Now मुझे last classification that is on the basis of functions. कि उन्होंने काम की परफॉर्म कर दिया. Now number 1 protoderm, number 2 procambium and last ground meristem. Protoderm, pro means initial, derm means skin. ठीक है, तो skin लिए ऐसी टर्म यूज करते हैं derm. Pro means initial, तो initial skin सी जिन्हें further की बनाया epidermis. ठीक है, की काम है एपिडर्मिस बनाना. एपी मींस आउटर, डर्मिस स्किन. तो जेडी प्लांट्स दी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हुंदी है, आउटर प्रोटेक्टिव स्किन हुंदी है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. नाउ नेक्स्ट इज प्रोकैम्बियम. प्रो अगेन मींस इनिशियल, जो फर्दर की बनाना चाहता है वस्कुलर बंडल्स. नाउ वस्कुलर बंडल्स मतलब बंडल फॉर्म्ड बाय वस्कुलर टिश्यूज. तो केड़े वस्कुलर टिश्यूज ने? जाइलम एंड फ्लोएम. तो एक वस्कुलर बंडल जेड़ा वो जाइलम, फ्लोएम ते कैम्बियम होगा. ठीक है, और वस्कुलर टिश्यूज मींस दैट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड. नाउ लास्ट इज द ग्राउंड मेरिस्टेम. जिदा की काम है ग्राउंड टिश्यूज तैयार करना. Number 1 hypodermis, number 2 cortex, next endodermis, next pericycle, next pith, and last is the medullary rays. These all are ground tissues. Now जी मैं क्लासिफिकेशन इत्थे ही खत्म करके अगे शुरू करा तो शायद ये सारा कुछ कॉम्प्लेक्स लगेगा. ठीक है, बट मैं बच्चे थे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨੇ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਲ ਲੇਅਰਸ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਵਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਟਿਸ਼ੂਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, मैं स्टेम ते रूट दोनों दी इंटरनल स्ट्रक्चर इत्थे ही रिप्रेजेंट कीती आ. ना बच्चे जदों असीं रूट या स्टेम दी सेक्शन कटिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो साडे कोल सेक्शन कटिंग कुछ इस तरह दी होंदी है. ठीक है, हुण इसे सेक्शन कटिंग चों असीं की कीता, असीं इन्ना पोर्शन लैके उहनूं इनलार्ज करके देखिया. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन. तो आप
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਮ ਤੇ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਟੈਮ ਤੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਮ that is present above ground and root that is present below ground or you can say underground। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਆ that is the epidermis। epi means outer, derm means skin। the outer protective layer is known as epidermis। ठीक है, that is present in both cases stem as well as root। now bachche jehdi epidermis layer are that is single layer made up of barrel shaped cells। ਇੱਕੋ ਹੀ layer ਆ barrel shaped cells ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ stem ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ in case of stem that epidermis is covered by the layer of wax cutin। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ cutin ਨੇ coating ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, wax coating ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। so this layer is known as cuticle। और cuticle ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ to prevent water loss। ਪਾਣੀ ਦੇ loss ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ evaporate ਨਾ ਹੋਵੇ। now ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ root ਦੀ ਹੈ? root is underground, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ water loss ਦਾ, so cuticle is absent। the cuticle किधर character है stem। but in case of roots instead of cuticle root hairs are present for the absorption of water। उन पानी को absorb करने वास्ते की लगे हुए हैं root hairs। so in case of root this epidermis layer is also known as epiblema or you can also say piliferous layer just because of these root hairs for the absorption of water। एक ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ single protective layer epidermis, cuticle in case of stem to prevent water loss and root hairs in case of roots for the absorption of water। now next is hypodermis। hypo means नीचे। ठीक है, तो नीचे वाली स्किन को ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ hypodermis which is 2 to 3 layer। ये दो layers भी हो सकती हैं, 3 layers भी हो सकती हैं। और hypodermis का काम है to provide mechanical strength, मजबूती देनी। और मजबूती ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਆ stem ਨੂੰ ਜਾਂ root ਨੂੰ? stem because that is above ground। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ mean area ਸਭ ਕਿਨੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ stem। so stem ਨੂੰ mechanical strength ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ hypodermis is present in case of stem but absent in case of roots। hypodermis is absent, hypodermis is present, काम की है mechanical strength। now next is cortex। now बच्चे cortex is multi layer, बहुत सारियां layers ने दोनों केसेस stem च भी ते root च भी और फंक्शन की परफॉर्म करता है स्टोरेज ऑफ फूड, खाना इकट्ठा करके रखना एक काम है cortex का। now after cortex next is very important layer endodermis। endo means under, dermis means skin। the अंदरली स्किन को ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ endodermis। just like as epidermis it is also single layer made up of barrel shaped cells। but in case of roots ਜਿਹੜੀ endodermis है that is very important जो कि नीट एग्जाम ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਉਂ? endodermis ਜਿਹੜੀ ਹੈ roots ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ casparian strips। ਹੁਣ ਇਹ casparian strips ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ endodermis cell ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ lateral walls ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਬਰਿਨ ਤੇ ਲਿਗਨਿਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। so these casparian strips they are formed due to the deposition of lignin and subrin at lateral walls। ठीक है जी, तो lateral walls ਦੇ ਉੱਪਰ subrin ਤੇ lignin ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ casparian strips ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ check post नाका। ठीक है जी, तो रूट का काम सी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पानी जब
ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ because of this check post which is formed by Casparian strips which are formed due to the deposition of lignin and suberin at lateral walls. Now in case of stem endodermis that will act as starch sheath. ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡॉट ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ starch ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਇੱਕ starch sheath ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ endodermis. Now after endodermis next layer is pericycle जो कि vascular bundles ਨੂੰ surround करता है that is the pericycle ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ vascular bundles ਨੂੰ outer portion ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ that is the function of pericycle. Now in case of roots pericycle हमेशा single layer ਹੁੰਦਾ है but in case of stem a pericycle single layer भी हो सकता है but a 2 to 3 layers भी बन जाता है ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ vascular bundles ਨੂੰ strength provide करनी होगी. ठीक है तो in case of stem pericycle single layer भी हो सकता है या 2 to 3 layers भी हो सकता है but in case of root it is always single layer. Now after that next is vascular bundle and each vascular bundle which consists of xylem, phloem and cambium in case of stem but not in case of root but I will describe this on later. इनका बहुत complex हो चुका तब आप बात करेंगे. Now next is pith. Pith is the central portion which is again just like formed by the parenchyma cells just like as cortex ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ storage of food. ठीक है the pith ਇੱਥੇ central position ਚ ਜਿਹਦਾ again ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ storage of food. Now last is medullary rays. तो जो medullary rays these are formed between two vascular bundles. दो vascular bundles ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ray ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ this is known as medullary ray और medullary rays का काम ਹੁੰਦਾ है lateral conduction. ठीक है जी lateral conduction करनी तो ਜਿਹੜੀ transport lateral sides ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ that is with the help of medullary rays. तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ground tissues complete ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ outermost protective layer epidermis then 2 to 3 layer hypodermis then multi-layered cortex then single layered endodermis then single or maybe 2 to 3 layered pericycle then vascular bundles and center ਦੇ ਵਿੱਚ pith और दो vascular bundles ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ medullary rays. Thank you students ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ topic complete